Namaskar, Adab, Sat Shri Akal. A very warm welcome, everyone. Good morning, afternoon, evening, wherever you are. Hope you're doing well, staying healthy, staying fit, and roaring for Sushant Singh Rajput and many others who deserve justice, who deserve a lot of respect, love, and their families deserve a closure. Uh, hello, Kala Raguji. Hello, ABC. Hello, all money, all corporate. Exactly. That's what is happening. केस क्लोज तो नहीं हुआ है बट लुकिंग एट हाउ थिंग्स आर कोई बड़ी बात नहीं है कि केस क्लोज भी हो जाए एंड आई डोंट वांट टू साउंड वेरी नेगेटिव टुडे ऑन दिस सेशन बहुत दिनों बाद आया हूं बट at the same time I really want to sound realistic. I really want to sound true to this movement, true to Sushant. uh, बहुत सारी चीज़ें ऑब्जर्व कर रहा हूँ मैं पर्सनली एंड अगेन ये सेशंस छोटे छोटे सेशंस जो हो रहे हैं जो भी मैं करूँगा दे आर ऑल बेस्ड ऑन माय ओन assumptions, they are all based on my own feelings, या my perspective as to how I see things transpiring. बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें तो ऑब्वियसली होती रहती हैं, साथ साथ हम लोग मोटिवेट भी होते रहते हैं, बट ऑफ कोर्स उसके साथ साथ नेगेटिविटी, नेगेटिव चीज़ें, ऐसी चीज़ें जो इस मूवमेंट के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है वो भी हो रही हैं. बट एट द सेम टाइम we will keep faith on God more than the agencies, more than anybody else. मैं I'm at a stage or at a state where I definitely just rely on my prayers, the prayers of SSRians, SSR warriors around the world, and of course the prayers of Sushant's family. Uh, आज एक अच्छी स्पेस थी, मैंने श्वेता को सुना. It was really nice to see Shweta also getting into this mode जहाँ पर she is able to bring certain things out. Uh, while there are certain things which, just like many other SSR warriors, I do not uh, kind of associate myself with. कुछ actions ऐसे भी हैं श्वेता के, which I know a lot of people are asking questions, raising questions around them, but at the same time, she is Sushant's sister. Uh, so that kind of covers everything for her. Namaskar, Akash Virji. Hello, TS. Hello, everyone. Uh, ये नहीं कि obviously अगर वो कुछ गलत करेंगी तो it justifies. Absolutely not. But I'm sure she's also under some kind of pressure. She's also under some kind of influence. Uh, अगर आप लोग सब याद करें, इसी तरह से शायद जब प्रियंका दी आई थी, she was also with someone. That's how it all started. Uh, and then she saw the real face of a lot of people. I think Shweta will definitely realize, will see the facts, the truth, and she will also realize at this point of time, I see goodness in what Shweta is doing simply because this has again ignited fire. It has also ignited the hopes of so many people. इतनी होप सबकी जाग चुकी हैं दोबारा से कि सुशांत के केस में फिर से एक वो फायर, वो एक मोटिवेशन, वो एनर्जी दिख रही है. एंड that's what matters, and that's what it should be about. It's all about Sushant, it's all about the movement, it's all about getting justice, and it's also about being in the news. मैं कुछ डेटा देख रहा था. Everything will be settled according to Allah's time, so there's no need to worry because justice is definitely, justice तो बिल्कुल मिलेगी. मैंने पिछले कुछ सेशंस में भी यही बात की है. एजेंसीज के थ्रू आए तो बहुत अच्छा रहेगा, नहीं तो आई नो there is some poetic karmic justice that will happen. But at the same time, कुछ चीजें जैसे मैंने कहा, let me just bring something up on the screen quickly. जो चीज थोड़ा हर्ट करती है, जो चीज थोड़ा दुख देती है देखने में,
is how these media channels have really ditched us, have really ditched Sushant. They have cheated. Yes, cheated would be maybe a softer word. सुशांत के रहते हुए भी सुशांत के साथ ऐसे लोग थे जो सुशांत को यूज करते थे, सुशांत के टुकड़ों पे पलते थे, लिटरली पलते थे. And then they are the ones who backstabbed Sushant. After Sushant left, there were many such people who were using, cashing on Sushant. Some of them continue to do it. बट उस टाइम पे जब ये न्यूज़ आई थी, अ, उस टाइम पे सबसे ज़्यादा जिसने फ़ायदा उठाया था वो थे मीडिया चैनल्स. इन लोगों ने हर तरह से यूज़ किया था सुशांत को. एंड दैट्स व्हाट काइंड ऑफ was so hurtful that I can't even believe when I looked at these numbers. Yeah, they did make a lot of sense. But let me just show you something. ये तब की बात है जब जून के बाद मीडिया चैनल्स ने केसेस को पिक किया था. लेट मी नो इफ यू कैन सी. ओके, ऑलराइट. ये हैं वो टॉप चैनल्स, आई वुड से टॉप 6 चैनल्स उस टाइम पे जिन्होंने सुशांत के बारे में बहुत सारी बातें की थी. ओह, दिस इज एक्चुअली अ रॉन्ग स्क्रीनशॉट. लेट मी शेयर द एक्चुअल स्क्रीनशॉट. ये वाला स्क्रीनशॉट भी मैं आपको दिखाऊंगा. एसएसआर कवरेज, यस. दीज आर द टॉप 6 चैनल्स जिन्होंने, अरे ये फिर यही स्क्रीन आ रही है मेरे सामने. ओके, या नाउ इट इज द करेक्ट वन. ये वही स्क्रीनशॉट है जो आई मीन दिस इज द कवरेज ऑफ ऑल दीज चैनल्स जिन्होंने सुशांत को यूज किया. And yes, use Kia is the right word, because all of these channels have kind of forgotten Sushant. All of these channels have now taken a U-turn. All these channels have literally stopped talking about Sushant, talking against the cabal, Bollywood. वो लोग जो involved थे, everything is gone. But if you look at the amount of time they spent, it was almost 80% of their entire talk time was spent on Sushant or Ria or Patni or whatnot. सबके सब ने यूज किया. जून के बाद आप देख रहे हैं किस तरह से somewhere around July, end of July, it all started, until end of like year, and of course full 1 year, it was all about Sushant. Everybody was talking about Sushant. It was good. It was all in the good spirit. I don't have any complaints उस टाइम के लिए, क्योंकि उस टाइम पे जो मीडिया ने किया, जो रिपब्लिक ने किया, जो बाकी चैनल्स ने किया, that's commendable. That's really commendable. बट वो कमेंडेबल तब होता अगर वो ऑनेस्टली होता. इट वॉज ऑल अ गिमिक, इट वॉज ऑल अ प्रोपेगेंडा, इट वॉज ऑल मिल्किंग of that situation, and then eventually taking the U-turn, or actually going on the track they were already on. मुझे जब ये इसके बारे में मैं देख रहा था, let me actually show you. उस टाइम पे एक बहुत बड़ा और इशू हुआ था, which was the country's economic down time that happened. What happened was GDP, jobs, economy वो सब सिंक कर रहे थे. We were at the rock bottom around that time. आप ये देखें कि किस तरह से around that time, अगर हम बात करें
यहाँ से it was on a decline. It was a major news on social media, but none of these channels picked up the issue of GDP, jobs, economy, or anything related to our country. Do I have a complaint around that? No, I don't. Because obviously ये बिकाऊ मीडिया ये उसी चीज के ऊपर बात करेगा which will kind of support their agenda, their propaganda. And that's what they were doing at that time, which was supporting a cause which garnered them more views, more popularity. लोगों के तो मल्टीपल चैनल खुल गए थे, बहुत सारा बिजनेस आ रहा था बिकॉज इट वॉज सुशांत. व्हाट हैपेंड नाउ? अब क्या हो गया? अब हम क्यों नहीं बात कर रहे सुशांत के बारे में? अब हम क्यों नहीं बात कर रहे सुशांत की जस्टिस के बारे में? क्यों नहीं सुशांत की फैमिली, सुशांत की सिस्टर्स को बुलाया जाता? क्यों नहीं, और कुछ नहीं, एटलीस्ट 14th of June they can invite the entire family or one of the sisters to talk about Sushant, about the whole justice fight. Nahi, kuch nahi ho raha because they were all sold out. They used it as their propaganda issue, and now they are getting money. They are being funded by the same set of people. मैं कुछ नाम लिख रहा था, पढ़ रहा था. अगर देखा जाए, ये बहुत चहीता एक नाम कई लोगों का आजकल, नितेश राणे. पहले भी मैंने बड़ी बार बोला है, आज भी बोलूँगा. सेम चीज़, वही वही चीज़ रिपीट, कि नितेश राणे ने इतना यूज़ किया इस सिचुएशन को, अभी भी कर रहे हैं, अभी भी वो करते जा रहे हैं. मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगा, अब तो पॉलिटिशियन का काम ही ये होता है पॉलिटिक्स करना, विच इज़ फाइन. एंड ऑफ द डे अब तो इलेक्शंस आ गए हैं. If you have anything, if you have evidences, if you have proof, आप क्यों नहीं यूज करके किसी का पॉलिटिकल करियर खत्म कर देते हैं? बिकॉज द एविडेंसेस यू आर टॉकिंग अबाउट, इट्स नॉट लाइक पेटी कोई कोई क्राइम है कि भाई किसी ने किसी के घर में चोरी कर ली या किसी का एक्सीडेंट करके भाग गया. इट्स नॉट लाइक दैट. इवन दो दीज आर ऑल्सो नॉट लाइक पेटी पेटी क्राइम्स, बट स्टिल इट्स अ मर्डर एंड यू आर टॉकिंग अबाउट एविडेंसेस जो आपके हाथ में है अराउंड अ मर्डर. तो अगर आपके पास इतने एविडेंसेस हैं, यू कैन फिनिश ऑफ समबडीज इंटायर पॉलिटिकल करियर. क्यों नहीं? किस लिए नहीं? मुंबई के डॉन के ग्रैंडसन इन्वॉल्व है तो कुछ नहीं करेगा मोदी नहीं. एग्जैक्टली, एवरीथिंग विल बी सेटल्ड. या, हेलो अश्नूर जी, हेलो हेलो, वेलकम. नाउ बहुत सिंपल एस वर्ड, semantic infiltration, intentionally, consciously misleading via subliminal imprint. Language words matter, like Republic corrected numerous times, still utilizes S word. Justice for SSR mandatory. Exactly. Uh, नाम नितेश राणे की जैसे मैं बात कर रहा हूँ, बहुत यूज किया, अभी भी कर रहे हैं. संदीप सिंह, जो मेरे लिए इस एंटायर केस में, ही इज, आई वुड कॉल हिम नंबर 2, कॉन्स्पिरेटर नंबर 2, क्योंकि फर्स्ट तो रिया चक्रवर्ती है ही है. कॉन्स्पिरेटर नंबर 2 संदीप सिंह. विद विच पार्टी इज ही affiliated? कौन उसको बैकअप दे रहा है, कौन उसको पैसा दे रहा है, कौन उसको फंडिंग कर रहा है? द काइंड ऑफ अपब्रिंगिंग, द जिस जिस तरह की फैमिली से वो आता है, जहां से वो आया है, ही कैन नॉट, अच्छे अच्छे बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स मूवी इंडस्ट्री बॉलीवुड में, वीव हर्ड स्टोरीज, वीव रेड स्टोरीज, किस तरह से वो बैंकरप्ट होते हैं जब उनकी एक दो फिल्म्स फ्लॉप होती हैं. पीपल हैव किल्ड देमसेल्व्स, पीपल हैव डाइड, पीपल हैव left the industry because they've incurred huge losses. How is a person like Sandeep Singh making all these flop movies, big budget flop movies, he's still surviving? कौन है जो इसको फंड कर रहा है, कौन है जो इसको सपोर्ट कर रहा है? सारी की सारी एक ही तरह की मूवीज बना रहा है, एजेंडा बेस्ड, जिससे प्रोपेगेंडा फैलता है, नेगेटिव
एनर्जी पास करता है, फिर भी वो मूवीज, majority of the people are kind of hating those movies. They are making them flops. Still, this man is able to make big budget flop movies consistently. So who's funding him? We all know back end पे किसका सपोर्ट है. सुशांत के केस में और भी कुछ नाम आए थे, और मैं सिर्फ ये बॉलीवुड, ये जो क्रैपी वुड है उसके बारे में फोकस अगर करूं, डीनो मौर्या डीनो मौर्या का वो वीडियो आज भी सबके दिमाग में, आज भी वो बहुत क्लियर विजुअली अपील होता है, जहां उसने कहा था, आई एम अलाइव, आई एम लाइव, आई एम अलाइव, इन द मिडल ऑफ द नाइट 14th को around 1 o'clock around, he came up with that video. We all kind of understood something happened. He deleted that video. He was high on something. He made that video. He deleted it. We still have the video. We've seen it multiple times. कौन उसको सपोर्ट करता है, कौन उसके बिजनेसेस को फंड करता है, वी ऑल नो दैट. अक्षय कुमार्स, करण जोहर्स, everybody who did a lot of wrong things around Sushant Singh Rajput. We all know who they are kind of supported. The question is, Maharashtra government में जब वो turmoil आया था, we all the SSRians supported, so that we could change the government, so that we could get justice for Sushant, so that we could uproot those people. Uh, Uddhav Thackeray and his महागाड़ी वगाड़ी जो भी गवर्नमेंट को निकालना बहुत जरूरी था, so that action could be taken against them, because there was supposedly some involvement in Sushant Singh. Some kya, there was involvement of both, the baby penguin and the papa penguin. वो गवर्नमेंट चेंज हुए, सालों साल हो चुके हैं, क्यों नहीं अब तक कुछ कर सके, किस लिए अभी तक उनको जेल में डाल सके, क्यों नहीं वो एविडेंसेस जो इन्हीं की पार्टी के लोगों के पास है, वो एविडेंसेस को सबमिट करके केस करके इनको क्यों नहीं जेल पे डाल सके. All this drama has been on and on and on and on for the last, what, 1300 some days. इतने साल होने के बाद भी आज भी इनसे कुछ नहीं हो पा रहा. आई वॉज टॉकिंग टू समबडी, और मैंने एक एग्जाम्पल सा दिया था. बहुत सुनते थे हम, few years back, when Congress was in power, that उनके जो सन इन लॉ है रॉबर्ट वाड्रा, his rise from rags to riches, वो एक स्टोरी ऐसी हमने सुनी थी, किस तरह से वो स्क्रैप मेटल एंड सब कुछ करने से नाउ ही इज अ मल्टी मिलियनियर. बहुत सारी कॉन्स्पिरेसीज कहूँ या बहुत सारा सच कहूँ, जो भी कहो, अगेंस्ट हिम, अगेंस्ट द गांधी फैमिली एंड ऑल दैट स्टफ. तो उसके बारे में बात हो रही थी कि अगर अगर वो सब सच था, अगर वो सब कुछ सच है, 10 साल हो चुके हैं इस गवर्नमेंट को जिसने क्वेश्चंस उठाए थे, why have they not put that man behind bar? Why is he still outside? आप सबके पास तो बहुत एविडेंसेस थे, आप सबके पास तो बहुत सारी चीजें थी इन लोगों के अगेंस्ट. Why have you not taken any action against Robert Vadra, but the Gandhi family? Why have you not put them behind bars? Why have not you finished their careers? Because end of the day, it's all a political game. पागल कौन बनता है, बेवकूफ कौन बनता है, आप, मैं, हम जैसी ये नाइव जनता. And we keep on falling in their, in their ये सारी जो गेम है, इन्होंने तो पॉलिटिक्स खेलनी है, करनी है, एंड वी गाइस, वी रियली आर मेड अ फूल. फूल से याद आया, आजकल नया एक और कांड चल रहा है इलेक्टोरल बॉन्ड्स का. अगेन, सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टीज, सब की सब इन्वॉल्व है. इट वाज अ स्कैम एज पर सुप्रीम कोर्ट, and that's why it was finished off this year February में. But
इन द लास्ट 4 5 6 years, जब से ये 2017 में इलेक्ट्रल बॉन्ड बने थे, हाउ हैज जस्ट वन पार्टी गेन सो मच? ये वही पार्टी है जिसने सुशांत को एक पॉलिटिकल इशू भी बनाया था। वोट बैंक पॉलिटिक्स हुई थी सुशांत के नाम पे। बिहार के वो स्टिकर जो शायद मैंने थंबनेल में भी लगाया है, दे बिकेम बिग थिंग कि सुशांत को जस्टिस दिलाएगी ये पार्टी, सुशांत के लिए काम करेगी ये पार्टी। कल को इन पार्टी और इनके जो चाटुकार लोग हैं, अगर इनको पता चलेगा कि सुशांत की पॉलिटिकल एफिलिएशन क्या थी, आई थिंक ये तो खुद ही बदल जाएंगे, ये तो खुद ही पलट जाएंगे कि हाँ, सुशांत ने तो सुसाइड ही किया होगा। जो आज की डेट में इस तरह से उसके साथ खड़े होकर दिखा रहे हैं कि सुशांत के वो साथ खड़े हैं। बट अगर आप सुशांत के साथ खड़े हो, जितने भी ये लीडर्स, वाई यू नॉट टॉकिंग टू द फैमिली, वाई यू नॉट टेकिंग एनी एक्शन अगेंस्ट द एजेंसीज? क्योंकि आपके पास तो पावर है। हर किसी के घर में आजकल ईडी, सीबीआई इतनी फ्रीली पहुंच रही है। तो क्या 4 साढ़े 4 साल, 4 साल में आप एक मर्डर केस जिसके बहुत क्लियर एविडेंसेस पब्लिक डोमेन में आज की डेट में है, आप वो एक्शन नहीं ले पा रहे? वो सीबीआई जो कि इनडायरेक्टली एक पर्टिकुलर पार्टी के लिए काम करती है, उसी के लीडर के पास एविडेंसेस है, तो वो सीबीआई, आप अब तक वो एक रेड कारपेट वेलकम क्यों नहीं कर पाए मिस्टर राणे का, और उनसे एविडेंसेस क्यों नहीं लिए? So, there are so many questions, there are so many things that I can ask and throw, but end of the day, very simple logic, कि अगर तो जस्टिस दिलाने का एक विश होती, एक मंशा होती, एक एक वो कहते हैं ना, पॉलिटिकल विल कहें, पर्सनल विल कहें, अगर वो होती, तो मुझे लगता है सुशांत को जस्टिस अब तक मिल चुकी होती। दैट इज व्हाई आई put in this kind of question in the thumbnail. क्या नो जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत? क्या सुशांत सिंह राजपूत या सुशांत सिंह राजपूत के साथ साथ और भी बहुत सारे लोग थे, उनकी डेथ, उनका मर्डर, इज इट नॉट वर्थ इन्वेस्टिगेशन? इज इट नॉट वर्थ अ थॉरो, क्लियर, ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन? एंड जो लोग भी इन्वॉल्व हैं उनको uh, उनको उनको अरेस्ट करना, उनके अगेंस्ट केस करना, वर्सेस जो आज की डेट में हो रहा है। रिया चक्रवर्ती ने अपना लुकआउट सर्कुलर को कैंसिल करवा लिया। मैं देख रहा था दीपेश सावंत, आई थिंक उसने अपना केस डाला है बेस्ड ऑन रिया चक्रवर्ती कैंसलेशन ऑफ द लुकआउट सर्कुलर, कि अब उसका भी कैंसिल हो जाना चाहिए। एवरीबडी विल बी, अगेन आई डोंट वांट टू साउंड नेगेटिव, बट जिस तरह रिया अपनी लाइफ जी रही है, वेकेशंस के लिए अब प्लान कर रही है, सेम दिपेश सावंत, सेम और लोग भी निकल जाएंगे। बट इज दैट व्हाट इट विल एंड अप लाइक? सब लोग बाहर क्लियर हो जाएंगे, सुशांत की फैमिली को टारगेट करके, उनको अटैक करके, उनको चुप करवा के, सोशल मीडिया ट्रोल करवा के केस खत्म करवा देना? इज दैट व्हाट इट इज? सुशांत को जस्टिस ना दिलवाना इन इटसेल्फ इज सच अ हीनियस क्राइम। इनको अगर लगता है कि ये अपनी वोट बैंक पॉलिटिक्स, अपनी इलेक्शन बेस्ड सिलेक्टिव सपोर्ट सुशांत को देने में, आई थिंक they'll gain something. They might gain some seats, they might gain some political mileage, but overall, in the end, will that mean anything to anyone? हम लोगों को पता है सुशांत was murdered, brutally murdered. कुछ लोग जो इन्वॉल्व थे, हमें उनके बारे में भी पता है, बट वो पोएटिक जस्टिस, वी आर ऑल वेटिंग फॉर दैट, एटलीस्ट आई एम, क्योंकि कर्मा किसी को नहीं छोड़ती। बट वी वुड ऑल लव, आवर लॉ, आवर जस्टिस सिस्टम टू टेक इट्स एक्शन अगेंस्ट दीज पीपल, सो दैट एक एग्जाम्पल सेट हो सके कि नो मैटर हाउ पावरफुल यू आर और आर, no matter how much money you have, if you have done something wrong, you will still be, taken through the justice system. मैं
बहुत सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे ऑब्वियसली आई हैव बिकम वेरी वेरी वोकल नाउ अगेंस्ट ऑल द रॉन्ग थिंग्स. मैं uh, वो क्या था हिम बिश्वा. I don't even want to really talk about that man क्योंकि he's he's criminal in simple words. Himantar Biswa is a criminal. मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था कुछ महीनों पहले. आई थिंक मैंने इसके बारे में एक बात भी की थी. He spent about 50 plus crore on his flights, helicopter rides, travel, 50 crore in a matter of about couple of years. सेम क्वेश्चंस रेज हुए थे जब वो दिल्ली के राजा जिन्हें कहा जाता है केजरीवाल ने अपना अपना तो नहीं ऑब्वियसली इट वाज द चीफ मिनिस्टर हाउस उसको अपग्रेड करवाया था फॉर अबाउट 45 करोड़. there were so many questions being raised by all the news channels and everybody. But at the same time जब ये हिमंत बिस्वा हेलीकॉप्टर्स राइड और ये डिफरेंट प्लेन राइड सब कुछ प्राइवेट जेट्स एंड ऑल व्हाटएवर नॉनसेंस करता है, these media houses will not raise any questions for 50 plus crore. जबकि मैं पढ़ रहा था उस टाइम पे एंड आई थिंक केजरीवाल या किसी ने तो ये अनाउंस भी किया था. Hello Varun, good to see you. Yes, that is again something that kind of poked me to come online today. It is. I don't know if you've seen Priyanka Di's tweet. समझने वाले लॉजिकल लोग आई थिंक वो समझ चुके हैं. This will be used or this is being used as a political kind of gimmick. हर इलेक्शंस के टाइम कभी कॉन्स्टिट्यूंसी या छोटे इलेक्शंस के लिए या लोकसभा के लिए अब जैसे होगा तो दे विल यूज इट एंड दे आर यूजिंग इट. Like I said, the only good thing in this is at least there is noise. There is some voice coming out of around the world. Uh, Shweta is also becoming active around this much more than she used to be. आज एक स्पेस हुई थी जहां पर उन्होंने मेंशन भी किया शी विल बी इन इंडिया इन जून अराउंड जून टाइम फ्रेम. आई जस्ट होप एंड आई जस्ट प्रे कि ये ऑनेस्टली I don't care who gets what kind of political mileage. Till the time Sushant gets justice, till the time Sushant की family को एक closure मिले, and those culprits who were involved in Sushant's murder, they are taken to court. I think I really don't care about who gets what votes, what mileage. मैंने तो पहले भी अपने इस चैनल पे अपने सोशल मीडिया पे भी बड़ी बार लिखा है. Anybody who can get us justice, can get Sushant justice, we will support them wholeheartedly. Blindly we will support you. बहुत सारे लोग आए, अनफॉर्चुनेटली एक ही पॉलिटिकल पार्टी के लोग आए हमारे पास और हमने उनको रेड कारपेट वेलकम किया. हमने उनके आगे without looking at time, without looking at anything, we gave them all the mileage, all the support, all the time that we could. And we literally उनको सोशल मीडिया प्रेजेंस जो कि उनकी शुरुआत में जीरो थी कईयों की, उनको वो सोशल मीडिया प्रेजेंस भी थी. बट लुक वेयर वी आर. आज की डेट में दोज पीपल leverage that mileage and they're nowhere to be seen talking about Sushant. एक बहुत ही अजीब सी मैंने चीज देखी थी. कोई क्रिकेट सीरीज चल रही है आई थिंक IPSL या कुछ ऐसे करके, मुझे उसका पता नहीं है. बट देयर वाज अ वीडियो दैट केम वेयर अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन, एवरीबॉडी वाज स्टैंडिंग देयर एंड विद सचिन, नॉट विद सचिन सॉरी, ये कुछ और था. अभिषेक बच्चन, अमिताभ बच्चन, एंड द पर्सन स्टैंडिंग नेक्स्ट टू देम वाज हमारे अपने मोहित भारतीय जी. वही मोहित भारतीय जिन्होंने शायद सुशांत के टाइम पे बॉलीवुड और बहुत सारी लोगों को
डायरेक्टली इनडायरेक्टली गालियां भी दी थी हमारे साथ बैठ के, टारगेट भी किया था। बट आज की डेट में वो वहाँ उनके साथ खड़े हैं। एंड वीव सीन अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स एज वेल। बहुत बुरा लगता है कि इन ऐसे सारे लोगों को हमने बहुत सारा सपोर्ट दिया। आज की डेट में कुछ हमारे साथ भी हैं वैसे अनबक, हमारे साथ तो नहीं, आई मीन नॉट विद मी फॉर श्योर, but there are people on social media who are still continuously supporting uh, all those wrong people. सबसे बड़ा नाम तो नितेश राणे ही है, जिनको सर 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 करके बुलाते हैं, एंड उनके पैरों में पड़ते हैं, because of course these people need visibility, these people need some kind of acceptance from the community. uh, End of the day, मैंने तो पहले भी कहा था, आज भी वही कहूंगा, आगे भी यही कहूंगा, इट रियली डजेंट मैटर। चाहे वो कंट्री का प्राइम मिनिस्टर हो, चीफ मिनिस्टर हो, किसी पॉलिटिकल पार्टी का लीडर हो, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, आई डोंट रियली केयर अबाउट दैट टिल द टाइम somebody is doing the right thing, चाहे वो लीडर हो, चाहे वो जूनियर हो, कोई भी हो। इवन एजेंसीज में अगर कोई अच्छा काम कर रहा है, वी विल आई विल, आई शुड नॉट बी यूजिंग वी एनी मोर, I will definitely stand by that person, no matter how much trolling I get, no matter how much hate I get. आप मुझे जो बोलना चाहते हैं करें, but end of the day for me, nation comes first, not a political party, not my religion, not my faith, not my affiliation. Nation comes first. जो देश के लिए अच्छा करेगा, जो मेरी कम्युनिटी के लिए, कंट्री के लिए अच्छा करेगा, I will definitely stand by, no matter what you want to say. Tag me, Khalistani, Pakistani, Rajasthani, Punjabi, जो कहना है आप कहें मुझे, doesn't really matter. But at the same time, uh, I just hope that whatever Shweta is kind of uh, giving us some kind of indication, it comes out really, really soon, really fast, and it's in our favor, because end of the day it is really very important that Sushant definitely gets justice. Sushant definitely deserves some kind of closure, and that's what is going to be my goal as well. चाहे कुछ भी हो, चाहे कुछ भी हो, uh, I really want to make sure that Sushant never gets forgotten. श्वेता ने आज बात की थी, and I kind of uh, want to follow those kind of footsteps. Not only do I want to emulate Sushant, but I also want to carry forward his legacy. सुशांत को बहुत लोग टारगेट करते थे, बहुत सारे लोग, बहुत सारे ऐसे लोग थे जो सुशांत को आइसोलेट कर रहे थे, बट सुशांत बीइंग सुशांत, he did not stop. Yes, poor guy, uh, he became a victim, but at the same time, end tak, he never lost his own stand. He really respected everyone, but at the same time, he valued his own ideals and followed on those paths. I really want to do that, and I encourage all of you to do that. Uh, एक अभी थोड़े दिनों पहले एक और ऐसा कांड हुआ था जहां वो एल्विश यादव एंड मुनावर एंड सबका हुआ। रिसेंटली मैं देख रहा था, कल या परसों की बात है, एल्विश यादव ने माफी मांगी है। मुझे उसकी डिटेल्स, उसके कांड में नहीं जाना, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बट आई जस्ट वांट टू मेक ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड वन थिंग। एल्विश यादव अभी रिसेंटली एक स्नेक ड्रग इशू में भी, पता नहीं केस चल रहा है कि नहीं चल रहा, वो तो वी ऑल नो हु are supporting him as well, so इसलिए I don't want to again go into the technicalities. He went and वो जो भी एक्टिविटी रिकॉर्ड हुई वीडियो पे और सबने देखी किस तरह उसने जाके एक और यूट्यूबर को मारा थप्पड़ एंड ऑल दैट स्टफ, एंड उसके बाद जो भी हुआ, इवेंचुअली he came out to say sorry for his actions, sorry for standing with Munawar, sorry for hitting that YouTuber, sorry for everything. Simply because
not because he realizes his mistake, not because he feels it from his heart, just because अगर वो ये apologies नहीं देगा, अगर वो ये sorry नहीं कहेगा, तो social media will not accept him. People will not accept him. तो उसकी जो fake apology है, it's all because that's the scenario in India right now. That's what has been created. Uh, so all I'm kind of saying, or I want to say, is don't blindly follow. वैसे भी ये छपड़ी क्लास लोग, this is another downfall that I've seen in my country, my India. हमारे वो लीडर्स, हमारे वो पॉलिटिशियंस, हमारे वो क्रिकेटर्स, हमारे वो डिफरेंट जो हमारे आइडल होने चाहिए थे, दैट हैज ऑल चेंज्ड इन द लास्ट 10 years. अब ये छपरीज हमारी नई जनरेशन के आइडल्स बनते जा रहे हैं. चाहे वो एलवेश यादव हो, मुनव्वर हो, वो क्या था, MC स्टैन हो, whatever nonsense जो चल रहा है, all these people have taken over. Listen to the music now, listen to the so called rappers, किस तरह के वर्ड्स यूज होते हैं. सोशल मीडिया पे आप देख लें इस तरह के अब्यूजेस, वो एक कोई मिस्टर सिन्हा एंड ऑल दैट, जिस तरह के लोग हैं, बारगी बागरी, the kind of language they use, irrespective of men or women, they're targeting, they're using such, Shehzad Poonawala, oof, he's an extreme troller. एंड ऑफ द डे, आई मीन, इफ आर लीडर इज अ ट्रोलर, तो आगे तो आप समझ ही सकते हैं. मैं देख रहा था ये जो यूट्यूबर्स को कुछ अवार्ड दिए, वहां पर बॉडी शेमिंग करना लोगों की, उनको डबल मीनिंग वर्ड्स यूज करना. अगर ऑब्वियसली हमारे लीडर्स ऐसे यूज करेंगे तो ऑल हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं. बट एट द सेम टाइम, all this downfall is because of some of our own faults, our own decisions. And this is the time, I think, where you all need to correct your decisions. End of the day, it's your vote, it's your time, it's your future, your kids' future. Think about it very wisely. Think about what you want to do, uh, and accordingly vote this time. Uh, Yep, that's what I believe. They will try to use the CBI update for votes. I'm sure that's smart enough. Unfortunately, some of our SSR warriors also are in that category. मैंने बताया जैसे, नितेश सर होता है, बहुत होता है. We all know, pretty much everybody knows that he has nothing. He's just using this as a political kind of, mileage. But still, for their own selfish visibility, they are ready to even, उनके पैरों में पड़ना नितेश राणे के. We all know who नितेश राणे is. उसके ऊपर तो खुद का क्रिमिनल केसेस ही अभी तो बहुत चल रहे हैं. But anyways, end of the day, I just hope the goodness that has come out of all of this is Sushant is again live in the hearts, in the minds, because of social media. Social media is a very responsible kind of a place, and I've always said that. Sara ji, not worth even showing it on the screen, but agar Sushant, agar आपकी आइडियोलॉजी से, and again with all due respect and humility, I'm going to respond to you. अगर ऐसा होता ना, अगर ये क्लियर होता कि सुशांत committed suicide, I think, I personally believe, CBI would have closed the case within the first few months. अब तक नहीं किया, इसका सिंपल रीजन, सिंपल लॉजिक यही है. They have something, but somebody is trying to stop them from doing or taking some action. So मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि, I know there will be haters, I know there will be people who don't believe in that. We'll the court will take, whatever cognizance. We all know what happened, the family knows what happened. Family has come out and shared those details with us on a high level, and we all believe in our system.
Exactly, I know. So that's fine. Absolutely, that's fine. I respect everybody. You can have your own opinion. I have my opinion. SSRians have our own opinion. So I know exactly. Reminds me of the same PR 2.5 3 years back when it used to be so active. हम भी बहुत ज़्यादा एक्टिव थे उस टाइम पे. Now they were also hyper active at that time. But it's good that these people are still lingering around, because end of the day they will face defeat. चाहे वो, मैं वही कहूँगा, चाहे वो पॉलिटिकली या एजेंसीज के थ्रू जस्टिस मिले, या हमारी स्पिरिचुअलिटी एंड कार्मिक जस्टिस मिले. We will get justice. We will eventually win. We will get a closure, and the criminals will be arrested, will be taken into court. We have a firm belief in that. But I think एक कमेंट जिस पे मैं आज ख़त्म करना चाहूँगा इस सेशन को. अशनूर जी ने जो लिखा था, डू सपोर्ट ऑल द फैमिली, can disagree respectfully with points, but keep in mind the overall objective. Please represent Sushant in his light, humanity, love, compassion. And that's what I believe. इसके बारे में भी मैंने पहले भी बात की है. मैं ज़रा सा सिर्फ टच करूँगा. घर में, हमारे अपने घरों में, we have brothers, sisters, we have kids. No two kids are alike. No two brothers are alike, no sisters, no siblings are alike. Everybody has a different perspective about things, about life, about what they want to do, what they want to eat, what they want to wear. No two kids, no two siblings can or are 100% alike. सुशांत की फैमिली में भी हो सकता है देर आर डिफरेंट ओपिनियंस, हो सकता है देर आर डिफरेंट व्यू पॉइंट्स. बट एंड ऑफ द डे, चाहे वो प्रियंका दी हो, चाहे वो नीतू दी हो, चाहे वो श्वेता हो, even Sushant ke father, all of them will have their own perspective around everything. They might have a different perspective of how they want to react in public, in person. Doesn't mean that Shweta is wrong or Neetu Di is wrong or Priyanka Di is wrong. Anybody could be, thinking in any direction. But eventually, they are the ones who lost Sushant, their brother. हमने पहले भी सुना था, बहुत बहुत प्रेयर्स, बहुत ही पूजा के बाद they had Sushant in their life. I really, I'm ashamed to see on Twitter, on social media, जब श्वेता को बहुत अटैक करते हैं लोग, and now people have also started attacking Priyanka Di. It is really disrespectful to Sushant. Forget Shweta, forget Priyanka, forget everybody. It's disrespectful to Sushant. Sushant knew a lot of things about so many people in different domains of life. I have never seen him speak or tweet or social media या न्यूज़ कॉन्फ्रेंस या कहीं पर भी किसी के अगेंस्ट गलत बोलते हुए. And now today, when I see some idiots on social media attacking the sisters, it's really disrespectful for the man who Sushant was. So my only urge, my only request would be, you have only two choices. One, you stand for Sushant, and if you do stand for Sushant for this justice fight, then do not disrespect any of the sisters, no matter their opinions are different or not. Or just get out and move into something else, because I don't think Sushant or Sushant's family really expects anything from such losers who are abusive, attacking the family or sisters. And let them take the battle. Anyways, this is their fight legally. All we can do is we can talk about it on social media and keep it alive, and that's what we are aiming to do. चाहे वो YouTube live से हो, चाहे social media पे हो, uh, we can keep the movement alive. But let them fight this battle, because it's a very tough battle. It's going to be a long battle. We all knew it. Almost 4 years now, and it's still going on. Just give them support.
So thanks for saying that, Ashnurji. I hope sense prevails. Otherwise, it really doesn't matter because some of us will continue no matter what happens, no matter what kind of negative publicity even people like us get. That's fine. But we know we are honest to Sushant and will continue to support this movement till the very end. So इतना ही कहूँगा आज और ज़्यादा नहीं बट एट द सेम टाइम माई हम्बल रिक्वेस्ट चाहे वो श्वेता हो चाहे वो प्रियंका हो चाहे वो कोई भी हो प्लीज stand with the family support them and continue to roar for Sushant Singh Rajput. uh, politicians obviously part and parcel of this movement. Nobody can change them, nobody can take them out, but at the same time let's ensure we don't become fools and we stand with those who stand with Sushant. On that note, I'm going to end the session tonight. I will see you guys soon. I know uh, बहुत सारे लोग जो जो डिफरेंट तरीके से डीएम्स में व्हाट्सएप पे मैसेजेस करते हैं so that I can do more sessions. Yes, I will do even more smaller sessions as well. I will try my best. Again, I've said it so many times, but मैं फिर कहीं busy हो जाता हूँ. But please, 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 always remember one thing. I am not going anywhere. I am definitely standing here for Sushant. I came here for Sushant. Actually, looks like he pulled me into this. I will never, never, ever, never, ever think of moving away from Sushant. And actually, he won't even let me. So let's continue to roar for Sushant. Let's continue to speak for Sushant. Um, no matter what happens, we will not stop. And जो भी श्वेता ने एक शेयर की है डिटेल, let's keep on praying. Prayers में बहुत power होती है. Let's keep on praying that let's ensure Sushant gets justice and this end of the whole fight for the justice of Sushant, it ends well and we get those criminals culprits definitely behind bars. Yes, blessings for all. And that's how we should all propagate this positive energy around this movement. Yes, Ashnurji, promise. Definitely, I promise. Thank you so much, Varun. I hope each one of us, हम लोग तो शुरुआत से देख रहे हैं, each one of us can instill that belief कि सुशांत को justice मिलेगी. जब भी मिलेगी मिलके तो रहेगी, but at the same time I just hope and pray Sushant's family gets that calmness and that closure that they really deserve. Jai Hind, Jai Bharat, and take care, guys. God bless. Please, please keep this fight on. Only and only for Sushant. Take care. I'll see you guys soon. Bye now.